at Ali Yavar Jung National Institute of Hearing Impaired, Mumbai. She has also worked with the students from underprivileged background. And when it comes to iCall, her association is from last 8 years. And she has been closely working with multiple stakeholders such as government sector, UNICEF, UNFPA, international organizations for migrants, corporate education sectors and NGOs, etc. So to create awareness around mental health and to provide ethical services, currently she is working as a program associate at iCall, where she supervises the team, handle partnerships, monitors all the programs and services of iCall. So without wasting any more time, let me hand over the dais to Madhuri. Uh, Hi, everyone. Thank you so much, Shobha, for this kind welcome. Yes, we met in the month of August and we were talking about what is mental health and how we can take care of that. Along with me for today's session, I have Ms. Anna Sharan, who is a program officer at Tripod and who has been working from last more than 11 years. She is also a clinical psychologist by profession, and she has been working with various capacities. She has been taking care of various responsibilities, where she has been assisting new counselors. She has been also involved with the training programs, partnerships, and she has also strategized various activities and other aspects of life work. So without taking much time, we will start our presentation. So छोटा सा presentation हमने बनाया है जहाँ पे हम बताएंगे काफी सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं. But before we start the session, I just want to introduce some rules. आज का ये जो session है हम 2 language में करेंगे जैसे last time हमने किया था. So we will use English and Hindi both mixture. Similarly, we have some reflective exercises and we would definitely want our participants to use that and share your thoughts, share your reflections. क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है कि सिर्फ जो पढ़ने से शायद हमें theory पता चले, but वो practical aspects नहीं पता चलेंगे and you won't be able to understand कि उसका impact कितना होता है. So thus आज के सेशन में हमने रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइजेस डाले हैं, कुछ एक्सरसाइजेस है सेल्फ केयर के लिए जो शेरॉन आपके साथ करेंगे. आई रियली वांट यू टू डू दोस एक्सरसाइजेस. कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं एंड वी विल सी कि एंड ऑफ द सेशन हम उन क्वेश्चंस को किस तरह से एड्रेस कर पाएंगे. सो ओके, स्टार्ट करते हुए जस्ट तो ये आज का हमारा एजेंडा कुछ इस प्रकार से है. We will start with talking about what is mental health and psychosocial well-being. We have talked about this particular phenomenon in the last session, but एक छोटा सा recap हम करेंगे जहाँ पे हम बात करेंगे कि mental health किस तरह से दिखता है, psychosocial well-being क्या होता है, and किस तरह से हमें अपने emotions पे अपने well-being को समझना है. We will be also talking about building resilience. How do I build my resilience in order to cope up with the stressful situations? What are things that might help me to build my resilience and how this procedure should look like? And towards the end of the session, we will be talking about coping skills. क्या coping skills हो सकते हैं, कैसे use करना है? And as I mentioned, Sharan is also going to have some experiential exercises for you. And of course, towards the end of the session, we maybe for 20 to 15 minutes, we will have question and answer, where like throughout the session, you can just write down your questions in the chat box and maybe towards the end of the session, we can address those sessions. I still remember जब हमने session किया था MP में काफी सारे questions लोग पूछ रहे थे
काफी पूछना चाह रहे थे, लेकिन टाइम की कमी के कारण हम नहीं कर पाए थे. तो maybe this might be the good platform where we can talk about this. Similarly, we are going to meet you in next few Saturdays as well. I think Shobhaji is the right person to share that timeline with you. But we will be talking about trauma, how to understand what is trauma and how I can help in that, how I can help myself in that particular situation. So वहाँ पे coping क्या हो सकते हैं, किस तरह से हम उस situation को deal कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने ऊपर काम कर सकते हैं, इसके बारे में हम फोकस करेंगे. And our last session is going to be about psychological first aid. So this is a component that might help you when your colleagues are, colleagues are facing some vulnerability in terms of emotional distress, in terms of trauma. So as a colleague or as a teammate, हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हमारी भूमिका होनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे. So coming back to the today's session, let's begin and let's focus about what is mental health and psychological well-being. ये कुछ चीजें हैं जो हमने पहले भी डिस्कस की है, but I thought it's a good idea to brush up on those aspects. If you see the definition of health given by WHO, that states that health is not only about feeling happy or feeling being okay physically, but that also states that it's all about physical, social, and mental well-being. And that's not only about not having diseases or not having issues, but it's also about enjoying your life, enjoying your relationships. Right? Mental health is as important as physical health, but unfortunately, हम काफी बार सिर्फ physical health के बारे में बातचीत करते हैं. We don't talk about mental health, thinking about that mental health is all about diseases, is all about challenges, and nobody likes to talk about challenges, right? काफी बार हमको ये भी बताया जाता है कि सोसाइटी में जब आपको खुद को प्रेजेंट करना है, आपको अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करनी पड़ेगी, आपको अपने वेलनेस के बारे में बात करनी पड़ेगी. If you show your negative aspect to the society, society is not going to accept you. But please remember that every human being goes through various challenges, and these challenges might come from various aspects. ये हो सकता है कि आपके वर्क लाइफ की वजह से आ रहा हो सकता है आपके पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से आ रहा हो सकता है आपका जो फैमिली एनवायरनमेंट है वो आपके लिए हेल्दी नहीं है, या फिर हो सकता है कि आपको लग रहा है कि शायद मैं अच्छे से कुछ चीजें नहीं कर पा रहा हूँ, हमारा खुद को देखने का नजरिया गलत हो सकता है. और इन सारी चीजों की वजह से हम काफी ज्यादा डिस्ट्रेस महसूस करते हैं. काफी बार हम अपने आप को प्रेशर करते हैं कि मुझे चीजें करनी है, आई नीड टू परफॉर्म वेल, आई नीड टू डू दिस, बट एट द सेम टाइम वी डोंट थिंक अबाउट इट व्हाट सॉर्ट ऑफ capacities that we have, what sort of training we have, what sort of coping mechanisms we have. We don't talk about all of those aspects, but we continuously demand from ourselves that I want to excel, I want to do excellent, I want to perform very well. And that leads to the emotional distress. और जब इमोशनल डिस्ट्रेस बहुत बढ़ते चले जाते हैं, काफी बार हम पेन महसूस करते हैं. एंड अगेन दिस पेन कैन बी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एज वेल. लोनलीनेस होता है जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं फील कर पाते, बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, किसी से बात करने का मन नहीं कर पाता. We feel that people may not understand my scenario. People might just say that I am not taking good care of myself, or I'm just saying this to seek attention from people. Right? And thus we tend to talk, thus we avoid talking about our issues, we avoid talking about our distress. Similarly, काफी बार डर भी होता है. We do experience anxiety as well. Feeling of helplessness that I don't know if anything is going to help me. I might experience some sort of situation in the future as well. So we keep thinking negatively, we keep thinking that this is the end of the life, this is how the life is going to look like. So a lot of helplessness, hopelessness, people
Similarly, that also leads to a failure at times, where हम काफी अपने जो गोल्स है वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, या फिर हो सकता है कि हम मेंटली ऐसा महसूस करें कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा, बट रियलिटी में हो सकता है कि आप बहुत कुछ कर रहे हो लेकिन हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, right? So there is a gap between what is the reality and what is being perceived, and that leads to another distress. Similarly, though we live in a connected family, we have our own support system, we have our own community, we have our own friends, right? काफी बार लोग आजकल सोशल मीडिया पे भी कनेक्टेड होते हैं, फिर भी काफी बार बहुत अकेलापन महसूस हो सकता है. We might feel that I don't know if I want to reach out to anybody else and I want to talk to them. I might feel that I just want to be alone and be myself. बट अगेन जब हम अकेले होते हैं तब ये जो निगेटिव थिंकिंग है वो और भी बढ़ जाती है, और हम और ज्यादा अकेलापन महसूस होता है. Spaces for support and happiness are shrinking. As I said, that people are mostly talking about positive aspect. If you see social media, जहाँ पे लोग काफी ज्यादा ये पोस्ट करते हैं कि उनका लाइफ कितना अच्छा है, but that doesn't mean कि that is the exact reputation of their life. There could be scenario that they are showing this one aspect of their life, but it is possible that they might be experiencing some distress, they might be experiencing some sort of concerns, challenges in their life. There are so many people who wants to talk, but nobody wants to listen. Everybody wants to talk about that, how they have overcome particular challenge. They want to show that I have this strength, मैंने ये किया है, मैं कर सकता हूँ, और मुझे अभी सबको बताना. ये जो होता है काफी बार लोगों को आप तक पहुंचने में मदद नहीं करता है, because people don't want to listen your success when they are going through the challenges or distress, right? अगर मैं डिस्ट्रेस में हूँ तो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे आके मैं चीजें डिस्कस कर सकूं, ना कि जहाँ पे सामने वाले की चीजें मुझे सुननी पड़े. ऑलरेडी मैं हेल्पलेस फील कर रही हूँ, ऑलरेडी मैं खुद के लिए लो फील कर रही हूँ, और मैं जब देखती हूँ कि सामने वाला सब कुछ कर पा रहा है, सामने वाले के पास बहुत कैपेबिलिटी है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, I might start feeling that I am very useless, I am good for nothing, right? And thus, there is a need that when we need to be more open-minded and support each other whenever they are going through distressful situations. When people are going through mental health issues, mental health challenges, when I'm talking about mental health challenges, I'm not talking about disorders. बल्कि यहाँ पे मैं उस सिचुएशन की बात कर रही हूँ जहाँ पे डिस्ट्रेस महसूस हो रहा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, पता नहीं किस तरह से जाके डिस्कशंस करने हैं, किस तरह से मीटिंग करना है, किस तरह से जाके मुझे अपने पॉइंट्स अपने सब कलीग्स के सामने रखने हैं, राइट? दैट इज आल्सो सोर्स ऑफ डिस्ट्रेस. तो ये डिस्ट्रेसफुल सिचुएशंस भी जब होते हैं तो वो इंसान ही उस परिस्थिति से नहीं गुजरता. It's not that person who is only experiencing distress, but also his surrounding as well, significant others as well, who experience certain distress. For example, अगर हम experience distress कर रहे हैं तो there are higher chances that we might end up saying something to our partner, right? There are higher chances that we might end up shouting at our kids, our family members, our friends, right? या फिर ये भी हो सकता है कि अगर मैं बहुत शांत बैठी हूँ, अकेले बैठी हूँ, और मेरी फैमिली मुझे बहुत टाइम के लिए ऑब्जर्व कर रही है कि कुछ तो गड़बड़ है, they might start feeling worried about my well-being. They might approach, and if I say that I don't want to talk to you about this, they might feel all the more worrisome about my scenario. They might feel कि क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से इनको मदद मिल सकती है. तो ये सिर्फ हमारे ऊपर असर नहीं करता है, तो हमारे फैमिली के ऊपर, हमारे कम्युनिटी के ऊपर, एंड हमारी सोसाइटी के वेलबींग के ऊपर भी एंडार्जली इम्पैक्ट करता है. Please remember that talking about these challenges, mental health issues, emotional distress, emotional challenges, is not a sign of weakness, but rather it's a sign of your strength. ये दिखाता है कि आप अपने सिचुएशन में बदलाव लाने के लिए कितना सोच रहे हैं, और इसलिए आप ये प्रयास कर रहे हैं. And thus,
it's important that we start talking about these issues more frequently. ये कंटिन्यूम तो हमने लास्ट टाइम भी किया था, बट क्विकली अगर हम रिकैप करें तो मेंटल हेल्थ can't be seen from a one perspective where people often think about that either मैं ठीक हूँ या फिर मैं बीमार हूँ. That's not the reality. अगर हम देखें मेंटल हेल्थ के काफी सारे शेड्स होते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. एक अगर मैं बात करूं एक्सीलेंट की, जहाँ पे हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, हैप्पी महसूस कर रहे हैं, कनेक्टेड फील कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, अच्छा कनेक्शंस बना रहे हैं, अपने पोटेंशियल्स को यूज करते हुए काम कर रहे हैं. उसके बाद अगर हम देखें तो आता है थ्राइविंग, जहाँ पे हमारा पॉजिटिव मेंटल हेल्थ काफी पॉजिटिव है, हम शांत महसूस करते हैं, थोड़ा शायद स्ट्रेस है लाइफ में लेकिन वो इतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, और उस स्ट्रेस की वजह से शायद हम जितना कर सकते थे या फिर जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना नहीं हो पा रहा है. बट अगेन वी आर नॉट स्ट्रगलिंग ओवर हियर. इफ आई कम बैक टू द नेक्स्ट स्टेज दैट टॉक्स अबाउट सर्वाइविंग मोड, जहाँ पे शायद वो स्ट्रेस जो है, चैलेंजेस है, काफी बढ़ गए हैं, इसलिए थोड़ा वरी महसूस हो रहा है, एंजाइटी महसूस हो रही है, नर्वसनेस महसूस हो रहा है. वी फील दैट आई वांट टू जस्ट विथड्रॉ माई सेल्फ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिनेरियो. कहीं पे अकेले जाके रहने का मन कर रहा है, सैडनेस की फीलिंग आ सकते हैं, खाना पीना अफेक्टेड हो सकता है. बट एट द सेम टाइम दिस इज द स्टेज वेयर पीपल आर मैनेजिंग. बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा सा इम्पैक्ट है इमोशनल लेवल पे, बट फंक्शनैलिटी अभी भी उतना चल रहा है. नेक्स्ट स्टेज इज ऑल अबाउट स्ट्रगलिंग वेयर द चैलेंजेस आर सिवियर. People do feel anxious, depressed, continuously lack of sleep, or don't feel like eating anything. They feel that I can't do my work, I can't perform at all. यहाँ पे challenges बढ़ रहे हैं. At the same time, performance भी कम होता हुआ नजर आ रहा है. जो पहले होता था अभी वो performance यहाँ पे नहीं दिख रहा. And no matter how much we are trying to work, there is a phase of burnout that we experience over here. And the last stage is a crisis where we continuously experience distress, we continuously experience anxiety, low mood, feeling very exhausted, don't feel like to go and show up at work, don't feel like कि मुझे काम करना है, आज मुझे छुट्टी चाहिए. और ये एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए नहीं, ये जो फीलिंग्स है वो काफी लंबे समय के लिए चलती है, और इसी वजह से उनका परफॉर्मेंस पे काफी अफेक्ट होता हुआ नजर आता है. सिमिलरली ये स्टेज में हमारा बॉडी वेट भी कम होता है क्योंकि हमें खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, या फिर कभी कभार बॉडी वेट बहुत बढ़ता है क्योंकि लोगों को बहुत खाने का मन करता है. इट्स अ कोपिंग मैकेनिज्म ऑफ देयर बॉडी दैट हाउ वेदर दे वांट टू ईट और दे डोंट वांट टू ईट. सिमिलरली यहाँ पे नींद भी काफी अफेक्टेड होती है. एक तो कभी नींद नहीं आती है, किसी किसी को नींद आती है तो वो उठ नहीं पाते हैं, they always feel sleepy, they always feel drowsy. It is important to understand that काफी बार अगर हम हमारी सिचुएशन को देखें तो हम अपने आप को ये स्ट्रगलिंग, सर्वाइविंग या फिर थ्राइविंग स्टेज में पा सकते हैं. लेकिन दैट डजंट मीन कि अगर आप अभी स्ट्रगलिंग मोड पे हो तो आप अभी थ्राइविंग मोड पे नहीं जा सकते. Fortunately, there are some aspects that we can follow and we can help ourselves, we can help our mental well-being. कुछ चीजें होती है जो हमें मदद कर सकती है ताकि हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो, और आज उन चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं. बट एट द सेम टाइम देयर आर हायर चांसेस कि वो चीज अगर हम ना करें तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है, और इसलिए जरूरी है कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा बातचीत करें. Again, if I summarize that how mental well-being, that excellent phase look like. So there is PERMA module that talks about that if people are experiencing mental well-being or psychological well-being, they often tend to experience positive emotions. They often think about that अगर मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इससे मैं कैसे बाहर आऊं, right? Please remember that positive emotion experience करना doesn't mean कि कभी भी गुस्सा ना करना. That doesn't mean कि कभी भी रोने जैसा महसूस ना करना. That doesn't mean कि anxiety महसूस नहीं करना. Experiencing positive and negative emotions are part and parcel of life.
we do experience these emotions, but जहाँ पे mental well-being बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे higher chances है कि हम उस सिचुएशन से बाउंस बैक करेंगे और सिचुएशन को किस तरह से अलग से परसीव करते हुए, पॉजिटिवली परसीव करते हुए कैसे वहां पे मुकाबला करना है उसके बारे में हम सोचते हैं. Similarly, people who are experiencing mental well-being also get engaged with various activities. They do lot of activities, but at the same time, they enjoy those activities. काफी बार आपने भी देखा होगा कि हम सेल्फ केयर के लिए कुछ एक्टिविटीज करते हैं. स्पेशली जब हमने लास्ट टाइम सेशन किया था, तब हमने कुछ एक्टिविटीज के बारे में बात की होगी, की थी. शायद आपने उसमें से कुछ एक्टिविटीज कर भी ली होंगी. पर शायद कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एक्टिविटीज करने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसका इम्पैक्ट नहीं दिखता. क्यों? क्योंकि वो जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं एज ए रूटीन करना स्टार्ट करते हैं. एंड व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ केयर एज जस्ट रूटीन एंड नॉट इन्वॉल्व इनटू दैट एक्टिविटी माइंडफुली, दैट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल. कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, जब तक आप उसमें फिजिकली मेंटली आप इन्वॉल्व नहीं होते, तो आप एंजॉय नहीं कर पाते. कितनी बार ये भी होता है कि हम खाना खाते हैं, अच्छा मूवी देखते हैं या फिर फेवरेट वेब सीरीज भी देखते हैं, लेकिन पता भी नहीं चलता कि वहां पे एग्जैक्टली क्या हुआ, हमने एंजॉय किया या नहीं किया. देयर इज कॉन्स्टेंट डिस्कनेक्ट दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग. क्यों? क्योंकि हम कंसिस्टेंटली हमारे चैलेंजेस के बारे में सोचते हैं. तो ये जरूरी है कि जो भी आप चीजें करो वो पूरी तरह से एंगेज होना वहां पे आप देखें. रिलेशनशिप्स को एंजॉय करना. When I'm talking about relationships, I'm not only talking about romantic relationships. Of course, romantic relationships are important, but ये भी जरूरी है कि हम अलग अलग तरह के relationships को cultivate करें. ये हो सकता है कि हमारे फैमिली के साथ रिलेशनशिप है, हो सकता है हमारे रिलेटिव्स के साथ रिलेशनशिप है, कम्युनिटीज के साथ रिलेशनशिप है, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहां के स्टेक होल्डर्स के साथ आपका रिलेशनशिप है. लेकिन ये रिलेशनशिप को कल्टीवेट करना. अगर हम सिर्फ काम के लिए बात करेंगे तो वी आर नॉट गोइंग टू फील हैप्पी, वी माइट फील डिसकनेक्टेड. एंड ऐसा समय होता है जहाँ पे हमें अपनी पॉजिटिव चीजें बताने का मन करता है या फिर अपने चैलेंजेस बताने का मन करता है, लेकिन हम किसी से शेयर नहीं कर पाते. Thus, it's important that you start building your relationship. Of course, there are going to be different dynamics, different boundaries when you cultivate these relationships. But it's important कि हम उसके बारे में सोचें. Start looking for meaning of your life. मेरा लाइफ का मकसद क्या है, मैं गोल क्या हासिल करना चाहती हूँ, मैं क्या देख रही हूँ अपने आप के लिए. Right now, when you're working as a Nikun fellows, what are the goals that you're looking at? Of course, salary is something that definitely we look for. काफी बार ये भी होता है, हमें लगता है कि अगर मैं करियर कर रही हूँ ये स्पेसिफिक, तो मुझे बहुत लोगों को मदद करनी है. Start defining what kind of help that we want to offer others. जब हम इन बारीक चीजों पे ध्यान देते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं. What are the things that we can expect from ourselves? So start looking for meaning, start exploring this. And again, if you feel that this is something which might seem overwhelming, which might seem difficult at times, start looking for the professional support. आप काउंसलर से कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं इस इश्यूज के बारे में. Accomplishments. Acknowledge your accomplishments. काफी बार ये होता है कि हम जब कुछ चीजें अच्छे से करते हैं तब हम उसको अक्नॉलेज नहीं करते. इनफैक्ट अगर कोई हमको एक्नॉलेज भी करता है, अप्रिशिएट भी करता है, वी जस्ट ट्राई टू डिसमिस दैट. ये कह कि अरे दिस इज तो वेरी नेचुरल, बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत सिंपल सी चीज थी जो मैंने की. या फिर वी टेंड टू से कि ओह थैंक यू सो मच, but we don't acknowledge the fact that we have done something very nice. We have done something which needs to get recognition. Start engaging yourself in start acknowledging your accomplishments. ये बताइए अपने आप को कि ये मैंने चीज की है और मैं उसके लिए अप्रिशिएट कर रही हूँ. Of course, there can be various ways that how you can appreciate. It completely depends upon you. But वो इमोशनली कनेक्ट कीजिए अपने अचीवमेंट्स के साथ.
So here I'm going to present few pictures and I want you to think about those pictures in terms of क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या इमोशंस हो रहे हैं, फिजिकली क्या हो रहा है, बिहेवियर लेवल पे क्या हो रहा है और आपको क्या लग रहा है यहाँ पे लोगों को मदद करना है। अगर आपको चाहिए आप हैंड रेज कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, बट आई वांट ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस। ठीक है, जितना हम ज्यादा, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जितना ज्यादा हम रिफ्लेक्ट करेंगे उतना ज्यादा हमको मदद मिलने वाली है। सो स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स। So I'm just presenting the first picture. This is the first picture where the person is maybe physically not well. So अगर मैं आपसे पूछूं आपको क्या लग रहा है यहाँ पे उसके क्या थॉट्स चल रहे होंगे? Similarly, you can also talk about emotions क्या है, फिजिकली वो कैसा महसूस कर रहा है, क्या बिहेवियर है, एंड व्हाट डू यू थिंक व्हाट आर द कोपिंग मैकेनिज्म ही माइट बी एंगेज्ड विद। Okay, thanks Isha. Isha has shared that he has fever. Okay. Yes, Sanskrit. I think, I mean, of course, physically तो वो बीमार है ही, वो दिख रहा है, पर इमोशनली या थॉट, अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई थिंक जब मैं बीमार होती या जब मैं बीमार होती हूँ तो पहला थॉट यही आता है काश मैं घर पे होती। तो होम सिकनेस और बेसिकली अ प्लेस ऑफ फेमिलियरिटी एंड कंफर्ट जहाँ पे कोई आपका ध्यान रखे, और जहाँ पे आपको सारी चीजें अवेलेबल हो। देन कोपिंग वाइज हो सकता है कि अपना खुद का ध्यान रखने की जगह प्रॉब्ली बिकॉज आप होम सिकनेस फील कर रहे हो while also not being physically good or feeling ill, you end up doing exactly opposite of what you should be doing, which is कि maybe आप बस नेटफ्लिक्स या टीवी लगा के आप बैठ जाओगे एंड घर पे खिलाने की जगह शायद बाहर से ऑर्डर करोगे या जो मिल जाए खा लोगे अभी आपकी सब। तो just a guess. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट संस्कृति। सो काफी सारी चीजें उन्होंने शेयर की कि शायद उसको बहुत लो महसूस हो रहा है, होम सिकनेस महसूस हो रहा है, घर वालों की याद आ रही है, wants to take care of themselves, but at the same time behavior अगर हम बात करें तो opposite हो रहा है, जहाँ पे वो ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसकी वजह से हमको अच्छा लगता है, टेक्निकली अच्छा लगता है, बट दैट मे नॉट बी हेल्पफुल। शायद अगर बीमार है तो वहां पे हमें थोड़ा आराम की जरूरत होती है, नींद की जरूरत होती है, राइट। बट ये काफी बार पता होता है लेकिन हम वो कर नहीं पाते हैं बिकॉज वी फील दैट दिस माइट हेल्प मी, आई माइट एटलीस्ट मेंटली फील ओके विद दिस, राइट। तो ये थॉट की वजह से हम उन चीजों में ज्यादा एंगेज हो जाते हैं। एनीबडी एल्स would like to add? ठीक है, तो मूविंग टू द नेक्स्ट पिक्चर एंड डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि अभी ईशा ने संस्कृति में जवाब दिया है तो आई वुड वांट अदर्स आल्सो टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटी। This is the second picture.
Anybody else will like to try? क्या हो रहा है, क्या thoughts आ रहे हैं, क्या behavior हो रहा है? Thank you for sharing this. रचिता ने कहा है, even though she looks fine and out together, on the outside she feels devastated in the inside. Isha has shared that maybe there is a problem in self-acceptance and negative thoughts as been seen and felt when she's looking at a mirror. Absolutely. And absolutely, as you correctly said, that this could be either कि हम किस तरह से दिख रहे हैं उसके बारे में भी हो सकता है, either it could or it could be about that, about self acceptance as an human being, कि मुझे चाहिए था कि मैं ये चीजें कर पाऊं लेकिन मैं वो चीजें नहीं कर पा रही हूँ. If I talk in terms of emotions, so there could be helplessness, there could be shame, guilt, right? That person might be experiencing. Yes, Tanushree, thank you for sharing this. She also said कि shame और guilt हो सकता है. Feeling distress, feeling that I am feeling rejected by other people. क्योंकि जिस तरह से मैं दिख रही हूँ, जिस तरह से मेरे क्वालिटीज है, सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है. इस वजह से मेरे रिलेशनशिप जो है सोसाइटी में, कम्युनिटी में, वर्क प्लेस में, वहां पे वो बिल्ड नहीं हो रहा है. Absolutely feeling of disappointment. Thank you, Ritika, for that. Physically as well, when you experience this, you might feel that I don't know if I look good. If I don't know, अगर मुझे अच्छे से prepare होके बाहर जाना है तो. Yes, Rachita. Ma'am, I was saying in my point that sometimes you look put together, you look like you're fine and normal, but inside you there are many thoughts, and you may be in a state of mind that no one else can see and understand. So when I said that, I meant this. Okay. Okay. Yes, absolutely. That's also very correct. We often tend to show ourselves as I'm happy. मुझे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, आई एम कोपिंग विथ माई इश्यूज. सो यही काफी बार हम पिक्चर दिखाने की कोशिश करते हैं, बट इनसाइड स्टोरी माइट बी वेरी डिफरेंट. Maybe picture in mirror is his, her internal thoughts and actual physical and mental health condition. Absolutely. Moving to the next picture. Confident and happy. Yes. Confident. Try this person self-assured, right? Optimistic, especially confident. And of course, अगर ऐसा situation है, I'm feeling confident, I'm feeling happy, excited, optimistic, definitely there are higher chances that my behavior is also going to be on a similar lines, where I am engaged into activities, I'm ready to take challenges, no matter what sort of challenges these are. This could be personal life, professional life, again, social life, but I'm ready to face those challenges. I'm ready to face the consequences and see कि what else can be done, right? मेरा बिहेवियर भी इस तरह से होगा, मैं खुद को बहुत अच्छे से सजाऊंगी. I will talk to others as well and focus on the positive aspect. At the same time, अगर मेरे पास कभी negative challenges आते भी हैं, negative scenarios भी आते हैं कभी, there are higher chances that I will cope up with these scenarios very easily.
or I will look for support mechanism who can help me in this scenario. Next picture. Stressed, tensed, exhausted, absolutely. Confused. I think he has n number of things to do and he is very confused कि कहाँ पे क्या prioritize करे. Clutter around represent the confusion inside. Yes. Overloaded, burdened, overworked, distressed. Absolutely. And if I ask you कि क्या thoughts चल रहे होंगे उस scenario, उस person के मन में. That all of us in this image, guys, as Divesh ne kaha hai. But to be very frankly, this is the representation of every professional area. No matter what sort of profession you are in, काफी बार ये scenarios हर किसी की life में आते ही हैं. How do I manage all of this? I can't do this. Absolutely thinking negative, thinking worrisome. Where do I start from? Stressed out. Maybe he's not able to prioritize his work. Absolutely. Is it necessary to have a happy face to be considered as optimistic? Suman, definitely we can come back to you when we are answering the questions. So I will address that question later on. Puzzled, someone can please help me. Why did I take all of this task? Absolutely. So we can actually relate to this picture and think about our life as well. कि जब बहुत चीजें आती है, जब हमको सामने से रिस्पॉन्स उस तरह से नहीं आता है, जब आप स्कूल्स में जाते हैं, उस तरह से जब हमको मदद नहीं मिल पाती है, या फिर जो चीजें हम करना चाहते हैं उन चीजों के लिए सपोर्ट नहीं मिलता है, तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, काफी बार ऐसा लगता है कि दिस इज इट, आई कांट हैंडल दिस चैलेंज, राइट. बट काफी बार अलग चीजें करना भी जरूरी होता है, पर जब हम बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, शायद उस सिनेरियो में वो चीज हमको समझ में ना आए, राइट. वी माइट फील दैट दिस, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक टू माय सीनियर्स एंड से कि मुझसे नहीं हो रहा है. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज हाउ प्रोफेशनल लाइफ मोस्ट ऑफ टाइम लुक्स लाइक. I won't say always, but most of the time ये होता है, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस अलग है, शायद सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस अलग है. सिमिलरली अगर आप अभी के पोस्ट पैंडेमिक के ये एरा को अगर हम देखते हैं, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग, राइट. सो understanding those changes, understanding those demands, and then implementing it, it's very difficult. Moving to the next picture. This is the next picture. Bullying might be. There's also a bar graph in the background that is going downwards. Yes. Insecure. Might be discriminated. Too many comments. Yeah. Mocking, insecurity, inferiority, superiority complex.
right? So this person, you again did this, okay? So they might feel that I am being targeted. People are against me. Yes, Shikha. Yeah, so my question is regarding the last image. I couldn't ask at that time. So, as we were able to see that the man was surrounded by a lot of work. So, I have a question that what do you think how much the habit of procrastination plays a role during this time? Because I'm not blaming a person or categorizing the habit of procrastination as negative. Mhm. But then a person builds something like this. I mean, maybe it starts from the school time as well, only, and then it just continues till maybe in your work life also it affects a person. And I think it's sometimes it's not a habit; it changes into a behavior of procrastinating things and then becoming anxious about that. So, what do you think? Absolutely. But at the same time, we also need to think about that. Definitely, procrastination could be one of the reason that why he has so much of work. But also, when we're talking about procrastination as behavior, we also need to think about that. Why is this happening? If I'm saying that the person has been engaged with the procrastination for a very long period of time, ये क्यों हो रहा है? काफी बार जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, वी स्टार्ट फीलिंग एंशियस, और लोग जब एंजाइटी महसूस करते हैं उसको डिनाई करते हैं काफी बार. They just feel like that's not what I'm experiencing. That's completely simple task. But might be that simple task is not, you are not feeling okay or you are not feeling connected due to n number of reasons. राइट हो सकता है कि मेंटली फिजिकली सोशली अभी वो काफी चैलेंजेस महसूस कर रहे हैं, इसलिए ऑफिस में काम नहीं कर पा रहे हैं, राइट. और यहाँ पे इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन होता है. जब भी हम डिस्ट्रेस महसूस करते हैं तब हम किसी ना किसी प्रकार का कोपिंग ट्राई करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम छोटे बच्चे का भी उदाहरण ले, जब वो स्कूल जाता है, जब उसको टीचर को अवॉइड नहीं करना है, टीचर को अवॉइड करना है, स्कूल को अवॉइड करना है, तब बच्चा काफी बार बताता है मेरे पेट में दर्द है, और विच मे नॉट बी द रियलिटी. अगर आपने देखा होगा तो स्कूल टाइम के बाद उसका पेट दर्द चला जाता है. वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? इट्स बिकॉज ऑफ द एंजाइटी. जब हम प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं तब हमारे पास ये रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होते. If I'm not visiting my work offices, there are consequences, there are some repercussions. So मैं बंक नहीं कर सकती ऑफिस, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे हम वो ऑफिस का काम ना करते हुए मे बी वी माइट एंगेज में सम अदर एक्टिविटी, जैसे कि सोशल मीडिया पे जाना, लोगों से बातचीत करना, या फिर लोगों से ये डिस्कस करना कि मेरे जीवन में कितने सारे इश्यूज हैं. आई एम फीलिंग सो फ्रस्ट्रेटेड, राइट. आई एम नॉट सेइंग दैट टॉकिंग अबाउट योर challenges at workplace is wrong, but only talking about challenges is not going to be helpful. We ultimately needs to think about that, how this discussion is going to be productive. क्या किया जा सकता है, right? So procrastination definitely is, most of the time procrastination happens whenever there are distressful situations. Whenever people feel that I am not okay to do this. शायद हो सकता है कॉन्शियसली उनके समझ में ना आए, लेकिन अनकॉन्शियसली चीजें होती रहती है. एंड दैट इज आल्सो वन ऑफ द इश्यूज दैट नीड्स टू बी टच्ड अपॉन. ये जरूरी है कि अगर आप नहीं खुद को मदद कर पा रहे हो, प्लीज विजिट थेरेपिस्ट एंड टॉक अबाउट दिस इश्यूज. बिकॉज एज आई सेड कि हर एक इंसान के कंसर्न अलग हो सकते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन करने के, तो वो चीजें समझ के उसके ऊपर हमको काम करना पड़ेगा. बट थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. Again, coming back to this particular picture, if you see, जैसे हम बात कर रहे थे, बहुत ridiculous feel हो रहा है, बहुत discriminated feel हो रहा है. He might feel that it's just me versus the whole world. I'm all alone by myself. I have nobody else to support. So the person might start feeling very fearful. They might feel that I don't know how do I help myself. काफी बार जब discrimination होता है बहुत ज्यादा, people might also start thinking about self-harm. They might start thinking about suicidal, they might have suicidal thoughts as well.
सो इस तरह से हम उस सिचुएशन को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। कई बार होता है कि हम जाके कोपिंग के तौर पे चीजें एस्केलेट करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, बट नॉट एवरी टाइम पीपल हैव दिस facility, or they might reach out to this other resources who can help them. Coming back to the next picture, I would like to come back to this one. मैं एक पिक्चर स्किप कर रही हूँ अभी के लिए, but this picture, what do you think what is happening? What are the emotions that person might be having physically as well? Behavior क्या हो रहा है? Unable to get exact thoughts across to the person, what that might be. बट अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या पिक्चर है, क्या सिनारियो है, ऐसा आपको लग रहा है? Who are these two people? Yes, Aswati. Hi, so it looks like the woman is getting her issues, maybe mental health issues, resolved with this professional, maybe a counselor, psychiatrist, psychologist, whoever. And according to the picture, what I feel or understand is कि उनके जो cluttered thoughts हैं या उनके दिमाग में जो भी confusions हैं, issues हैं, वो प्यार से compassion के साथ, शायद empathy के साथ ये professional resolve कर पा रही हैं, और इसलिए वो जो एक क्या बोलते हैं ऊपर drawing बनी है, तो that's what I guessed from this, and I'm guessing क्योंकि वो अपनी healing journey पे होंगी. हीलिंग जर्नी में काफी उतार चढ़ाव आते हैं. आई मीन द हीलिंग जर्नी इज नेवर अ लीनियर जर्नी, स्पाइरल है. तो आई एम गेसिंग उनके इमोशंस भी ऊपर नीचे जा रहे होंगे, बट वाइल गोइंग थ्रू ऑल दैट आई एम गेसिंग कि एक कांस्टेंट फीलिंग जो होगा वो शायद एक रिलीज या रिलीफ का होगा, which might be the constant emotion while she is going through her healing journey. Thank you. Thank you for sharing this. I can see some of the responses. The less in her thoughts are arranged and made sense by the therapist. Muddled thoughts and issues of the client are being clarified and understood by the therapist because of their good working relationship, making sense of thoughts that she was having in isolation. Absolutely. So as you correctly said, this could be I'm not saying this could be the scenario where people are having counseling session when there is a therapist who is taking notes, and the client is talking about her thoughts, emotion, challenges, and as you stated it, it's cluttered. She doesn't know that how am I supposed to express myself. There are so many thoughts, so many emotions. और काफी बार हमें ये लग सकता है कि मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू करना है, कहाँ एंड करना है, क्या होना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स थेरेपी के बारे में. सो इट्स वेरी नेचुरल टू फील ओवरवेल्म्ड, वेरी नेचुरल टू फील कंफ्यूज्ड एट द स्टार्ट ऑफ द थेरेपी. But with the help of counselors, you will be able to understand how the process is going to look like, क्या मदद मिल सकती है, कैसे मदद मिल सकती है. The therapist will help you to make sense of issues, make sense of the concerns that you are experiencing, and slowly you both can build on what is something that you would like to go ahead with. So coping किस तरह से करना है, क्या resolve किया जा सकता है, क्या interventions हो सकती है, इसके बारे में बात किया जा सकता है. But to be very frankly, talking to therapist might be very difficult because again, as I said, कि बहुत confusion होता है कि process किस तरह से दिखेगा. Similarly, ये काफी बार जब हम बात कर रहे हैं इमोशंस के बारे में, ये वो इमोशंस है जो बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं. This could be again about discrimination, trauma that we might have faced. This could be about childhood issues that we might have experienced.
या फिर हो सकता है कि अभी की जो सिनेरियोज है जहाँ जो मुझे अचीव करना है मैं नहीं कर पा रही हूँ. So this could be the difficult scenarios, this could be the difficult emotions that we are talking about. And thus, starting में आपको लग सकता है बहुत overwhelming है. This is not something that I would like to go ahead with. But please trust me, the more you process with this particular counseling, there are higher chances that you will feel connected and higher chances that you will get more clarity about your own emotions. Yes, Priyanshi. Hey, hi, Madhuri. I just wanted to understand. I hope I'm audible. Yes, yes. Yeah, just wanted to understand. So let's say somebody goes to therapy and they have a cluttered mind and whatsoever, and the therapist helps them understand, connect the dots, and give some clarity. But does it, at the end of the day, does it resolve the issue, Hmm. or does it really make you feel better? Because what the therapist is doing, they're giving you some clarity about your own thoughts, and if you're self-aware, I think you get that clarity on your own. Sometimes you know why it's happening, and but then at the end of the day, when does the issue get resolved, and how should the issue sort of get resolved per se? Like, who has to make those choices, and whether the therapist helps you to sort of you know uh, get to those choices is my question to you. Right. Right. So if you see, therapists are not going to help you with one issue, but there are multiple issues that you can discuss with them. First of all, if you feel that I know what I am struggling with, I have those resources, you need not to reach out to therapists. But if you feel that I would like to work on certain areas, so it can be about a personal personality development. It can be about, as I said, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ट्रॉमा है, ऐसे कुछ इश्यूज है. डेफिनेटली द काउंसलर इज नॉट गोइंग टू से कि अच्छा ये करने से ये स्टॉप हो जाए. डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट समथिंग इज इन आवर हैंड, राइट. और प्लस एट द सेम टाइम अगर मैं वर्क लाइफ कंसर्न्स के बारे में बात करूँ, तो वर्क लाइफ कंसर्न के बारे में मैं अपना नरेशन दे सकती हूँ. काउंसलर जाके मेरे सीनियर से बहुत बात नहीं करने वाले, है ना. तो काउंसलर क्या कर सकता है, काउंसलर एंड क्लाइंट बोथ विल डिस्कस अबाउट देयर इश्यूज. काउंसलर कभी भी आपका सोल्यूशन नहीं देता है, तो दोनों डिस्कस करके बात करते हैं कि ये इशू है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है तो कब प्रोक्रेस्टिनेशन है, क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन में प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, क्या ये कभी किसी के साथ आपने डिस्कस किया है, क्या ऐसी चीजें डिस्कस की जाती है. एंड देन वी कैन बिल्ड अपॉन दैट whenever there are these distressful situations or whenever there are these triggers which leads to procrastination, how do you handle those triggers. क्या करने से आपको शायद वहां पे मदद मिल सकती है. अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट कि अगर काउंसलर ने एक चीज मुझे बताई तो वही मुझे हमेशा हेल्प करेगी. चांसेस से किसी किसी को करेगी, चांसेस से किसी को नहीं करेगी. Every human being are very unique, and that is why we don't have Prosins or paracetamol for emotional distress or pain. So यहाँ पे हर एक इंसान की क्वालिटीज, उनके इंटरेस्ट एरिया, उनका कनेक्शन समझते हुए काउंसलर्स आपको इंटरवेंशन से. अगर आपको लग रहा है काउंसलर ने जो इंटरवेंशन दिया है दैट इज नॉट बीइंग हेल्पफुल, you can again visit that counselor. Of course, there are follow-up sessions that needs to be done. Counseling कभी भी एक सेशन में नहीं होता है. फॉलोअप सेशन में आप डिस्कस करोगे कि क्या चैलेंजेस रहे हैं आपके उस एक्टिविटीज के साथ. What were your emotions? If this activity wasn't helpful, what was happening? So counselor will make an analysis of that particular scenario, and based on that, you can come up with other issues. You can come up with other intervention that might help you. But please remember that काफी बार एक चीज दूसरी चीज के साथ कनेक्टेड होती है, एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम के साथ कनेक्टेड होता है. एंड thus it is important कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा एक पर्टिकुलर कंसर्न रिजॉल्व हुआ है, तो काउंसलर विल हेल्प आस्क यू कि क्या और चीजें जो आ रही है, फॉर एग्जाम्पल इमोशनल डिफिकल्टीज, उसके बारे में आपसे बातचीत करना चालू कर देते हैं. सो इट्स ऑलवेज नॉट अबाउट वन एस्पेक्ट, but we take one aspect at a time and slowly we can work on the issues. I hope मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर किया है.
Yeah, I got it. I just have one more question. You can let Is me know it if I can ask that. is it okay if we ask these questions towards the end of the session? Because there are some activities that we would like to do. So how about having this Q&A for last 15 minutes? Great. Yeah, work. Thank you so much. So moving to the next slide that talks about that what are the risk factors that might affect our mental health. One is low self-esteem, constantly thinking that I am not good enough, I'm not beautiful enough like other people are. Having poor resilience, poor problem solving skills. Often people feel that I need to solve my problem. I shouldn't be reaching out to others to seek help. Unhealthy relationships where people are just screaming at each other. There is no cordial relationship. एक दूसरे को मदद नहीं करते हैं. सिर्फ expectations बताते हैं खुद के. अगर कुछ गलती की पार्टनर ने तो उसके बारे में उसको ब्लेम करना. डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस, वायलेंस होता है, बुलिंग होता है, तो वहां पे भी काफी बार लोग मेंटल हेल्थ कंसर्न्स एक्सपीरियंस करते हैं, चैलेंजेस महसूस करते हैं. अगर फिजिकल स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, बीमार है, जैसे हमने फर्स्ट पिक्चर में भी देखा था, तो बहुत हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होता है. वी फील वेरी सैड, वी फील वेरी वी फील कि मुझे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है. कम्युनिटीज के साथ कनेक्शन अच्छा नहीं है, फैमिली के साथ बॉन्ड अच्छा नहीं है, हमारे रिलेशनशिप्स अफेक्टेड है, तो वहां पे भी हमारा मेंटल हेल्थ रिस्क फैक्टर में आ जाता है. At the same time, if I'm experiencing certain challenges on a physical and psychological level, और अगर मेरे पास हेल्थ केयर सिस्टम अवेलेबल नहीं है जहाँ पे जाके मैं मदद मांग सकूं, there are higher chances that these people might struggle more. So similarly, if I want to talk about protective factors, same चीज का ही अगर हम देखें तो जिनका सेल्फ एस्टीम बहुत अच्छा होता है, जो अपने आप को बहुत अच्छे नजर से देखते हैं, अपने बारे में प्यार करते हैं, अपनी क्वालिटीज को समझते हैं, तो हायर चांसेस है उनका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा होता है, लोगों से अच्छा कनेक्शन होता है. अगर रेजिलियंस अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्व किस तरह से करना है, किस तरह से लोगों से मदद मांगनी है, और जब मदद मांग भी रहे हैं तब किसी भी तरह का हीन भावना नहीं आ रही है. देयर इज नो गिल्ट फॉर सीकिंग हेल्प. They have healthy relationship, they talk about their challenges, they talk about their emotions openly. At the same time, they express their emotions very easily. अगर जो भी आप महसूस कर रहे हो, it can be again जहाँ पे आप अच्छा महसूस कर रहे हो या फिर बुरा महसूस कर रहे हो, इजीली अपने इमोशन शेयर कर पाते हैं और अपनी नीड्स जो है, डिमांड से वो बता पाते हैं. सेफ एनवायरनमेंट में बिलोंग करते हैं जहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, अब्यूज नहीं हो रहा है उनके साथ, कोई भी उनके बारे में कोई भी गलत तरीके से बात नहीं कर रहा है उनकी आइडेंटिटी को लेकर. तो अगेन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोटेक्टिव फैक्टर. गुड फिजिकल हेल्थ, या फिर अगर कभी हेल्थ कंसर्न्स भी आए, अगेन फिजिकल साइकोलॉजिकल हेल्थ कंसर्न्स आए, दे हैव दिस रिसोर्सेज वेयर दे कैन सीक सपोर्ट. दवाइयाँ ले सकते हैं, थेरेपी ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिटी में कनेक्टेड फील कर रहे हैं, फैमिली बॉन्ड अच्छा है, सोसाइटी में बॉन्ड अच्छा है, जब जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहां पे अपने जो कलीग्स है उनके साथ भी अच्छा बॉन्ड रखते हैं. सो ये फैक्टर्स होते हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाता है, प्रोटेक्ट करता है. So one video that I would like to share right now. एक छोटा सा वीडियो है, मैं चाहूंगी कि हम ये वीडियो को देखें.
तो जैसे आप देख रहे थे कि दैट बकेट रिप्रेजेंट्स आवर माइंड एंड दैट टैप रिप्रेजेंट आवर स्ट्रेसेस. There are definitely various challenges, various issues, various emotions we are going to experience, and that is part of personal development. We can't say कि मुझे ये experience नहीं करना है. जरूरी है कि जब हम ये चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं तब हम कोपिंग्स को ढूंढें. जिस तरह से वो बकेट में होल करने पे पानी ओवरफ्लो नहीं हो रहा था, उसी तरह से हमें हमारे मन को भी ओवरफ्लो करने से रोकना है. And control is not the idea. The more you control, the more stressful you are going to feel. Thus, ये जरूरी है कि हम buckets में होल करें. So buckets में होल करना यानी और coping mechanisms ढूंढना, ऐसी चीजें ढूंढना, ऐसे spaces ढूंढना जहाँ पे हम ये चीजों के बारे में more openly discussions करना है, right? And now Sharon will help us to understand कि ये किस तरह से coping के बारे में हमको मदद काम ये कोपिंग के लिए हमें काम करना जरूरी है. Thank you, Madhuri. I'll quickly share the screen. अभी हम बिल्डिंग रेजिलियंस के बारे में देखेंगे. क्या मैं जान सकती हूँ रेजिलियंस का मतलब क्या है, आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है? Anyone want to share what is your understanding of resilience? Being able to bounce back from adversities, yes. Recovering back. और कोई किसी और का कोई और उपाय है? ठीक है. मूविंग फर्दर हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखते हैं रेजिलियंस का मतलब क्या है. जैसे आप बताए हैं कि एबिलिटी रिकवर करने का, जो भी हमारा चैलेंजिंग सिचुएशंस है, नेगेटिव सिचुएशंस है, हम वहां से कैसे कोप कर रहे हैं, अपने पर्सनल चैलेंजेस से कैसे कोप कर रहे हैं, और लाइक कैसे हम डिफरेंट कोपिंग स्ट्रेटजीज यूज करके हम उस सिचुएशन से मैनेज कर पा रहे हैं, इज ऑल अबाउट रेजिलियंस. देवेश जी ने बताए हैं कि रेजिलियंस इज टॉकिंग टू स्टेक होल्डर्स, नोइंग फुल्ली they ain't gonna work, but you stay positive in your mindset. Absolutely, it is also about our mindset कि हम कितने positive है, right? Knowing that you can handle it strongly, absolutely. Being able to hold on in a difficult or challenging situation without losing ourselves and giving up, absolutely. Okay. So resilience का in Latin again word में अगर हम देखते हैं तो उसका मतलब ये है कि bounce back. हम कैसे bounce होके हम वापस उस परिस्थिति से निकल के बाहर आते हैं, राइट? हम हर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरते हैं, राइट? लाइफ में काफी सारी चैलेंजेस आते हैं ऑन डेली बेसिस इन आवर वर्क, एनवायरमेंट, फैमिली, पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप में, राइट? सो अगेन रेजिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए, राइट? एंड ये रेफर करता है कि लाइक तुम एक सिचुएशन में कैसे आप अडेप्ट कर रहे हैं और कैसे बाउंस बैक कर रहे हैं, राइट? कोई भी ट्रॉमेटिक सिचुएशंस हो या फिर कोई तनाव हो या फिर किसी भी प्रकार के चैलेंजिंग सिचुएशंस है, हम उसमें से कैसे बाहर निकल आते हैं. जैसे कुछ लोगों ने यहाँ पर चैट में भी बताए हैं कि लाइक हम हमारा कंट्रोल लूज ना करते हुए, बराबर, और हम आगे लाइक फोकस कर पाए, हमारा हम खुद की क्षमता पे ट्रस्ट करके या बिलीव करके हम आगे सिचुएशन को फेस कर पाए, राइट? इमोशनल रेजिलियंस का मतलब ये है कि हम जब हमारे
जो भी हमारे थॉट्स हैं या डिफिकल्ट चैलेंजिंग फेस जब होते हैं, हम काफी परेशान होते हैं, राइट? तो जब हम अपने आप को उस सिचुएशन को काम रखते हुए हम नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को क्या है समझ के उससे जब हम फेस करते हैं, जो हमारे अंदर की जो भी सोच विचार, जो हमारी बिलीफ है या फिर हमारी जो इंस्टिंक्ट स्ट्रॉन्ग थॉट्स है, वो हमें मोटिवेट करता है कि हम उस सिचुएशन से स्लाइड ना हो जाए या गिर ना जाए, फिसल ना जाए। तो हमें जो होल्ड करके रखती है वो जो हमारे अंदर के इंटरनल जो बिलीफ, इंटरनल जो सिचुएशन है, मोटिवेशन है, दैट इज अबाउट इमोशनल रेजिलियंस, राइट? मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि रिसर्च ये कहता है कि जो जिनके हायर रेजिलियंस होते हैं, जिनके कोपिंग स्टाइल, कोपिंग मैकेनिज्म्स अच्छे होते हैं, जो कोपिंग अच्छी तरह से हर सिचुएशन को समझ के उनकी कोपिंग कैपेबिलिटी जो वो बिल्ड कर सकते हैं, काफी वो उनका ओवरऑल वेलबींग अच्छा होता है, राइट? तो जैसे हम हर कोई अपने फिजिकल या कोई भी रिलेशनशिप में या एकेडमिक रिलेटेड या हम अभी स्टेक होल्डर्स के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं, काफी सिचुएशन हम फेस करते हैं, बराबर? तो हम मान के चलते हैं पर्सनल क्राइसिस कोई सिचुएशन है, कोई फिजिकल इलनेस है, हम कैसे बाउंस बैक होते हैं? क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम परहैप्स यूज करते हैं, या हमारे प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम यूज करते हैं बाउंस बैक होने के लिए? Anyone would like to share your thoughts? Take a walk when you're losing your calm. Okay. Reach out to a colleague and share with them, or rant. Okay. Using social support, self-care activities, improving lifestyle, uh, letting it out by communicating. Okay. Absolutely. All these are very important factors which helps us to be resilient, right? तो हर कोई जब हम, बट अगेन इसकी मतलब ये नहीं कि रेजिलियंस के मतलब हम सिचुएशन से दूर भाग रहे हैं या फिर हमारे इमोशंस को हम सप्रेस कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं, बराबर? रैदर ये हमें दिखाता है कि लाइक हम हमारे चैलेंजेस को कैसे फेस कर सकते हैं और उसका क्या क्या तरीका हो सकता है, राइट? सो जैसे कुछ लोगों ने यहाँ पर चैट में भी बताया कि इम्प्रूविंग करना, सोशल सपोर्ट या फिर लाइफस्टाइल में इम्प्रूव करना, सेल्फ केयर एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस देना, राइट? सो ये तरीका हो सकता है जो हम रेजिलियंस पे बिल्ड कर सकते हैं, राइट? सो टेकिंग टाइम फॉर आवरसेल्फ, राइट, and understanding our own strength and help people, like whatever your thoughts are, your views are, वो आप शेयर कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम जो हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा है वो भी हम समझ रहे हैं, बराबर? सो इट्स अ टू वे थिंग, राइट? सो बिलीविंग योर सेल्फ ऑल्सो, लाइक ट्रस्ट योर सेल्फ कि आपका कैपेसिटी क्या है, आपका एक्शंस क्या है, एंड रिस्पॉन्सिबल, लाइक टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस एंड योर इमोशंस, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट, राइट? और ये भी ध्यान रखिए कि रेजिलियंस आके एक परमानेंट काइंड ऑफ लाइक स्टेज नहीं होता है, राइट? हम मान के चलते हैं कि कुछ सिचुएशन में हम बाउंस बैक हो सकते हैं, से फॉर एग्जांपल 4 दिन से अगर हम थोड़ा लो फील कर रहे हैं एंड साथ ही साथ थोड़ा खांसी या फिर थोड़ा सर्दी वगैरह हो जाता है, तो थोड़ा हम लो फिजिकली भी फील कर रहे हैं, इमोशनली भी फील कर रहे हैं, बट हम 4 दिन के बाद शायद वो बेटर फील कर सकते हैं, अगर हम रेस्ट लेते हैं या फिर मेडिसिन लेते हैं, हम बेटर फील करते हैं, बराबर? ऐसी कोई सिचुएशन हो सकता है कि वर्क लाइफ रिलेटेड कभी कोई चैलेंजेस आ जाता है, थोड़ा हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, थोड़ा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस फील होता है, ह्यूमिलेशन फील होता है, या कई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स होते हैं, अब्यूज वगैरह, बुलिंग वगैरह होता है, तो शायद उस सिचुएशन में हमारे लिए थोड़ा वो नेगेटिव या ओवरवेलमिंग इमोशंस हो सकते हैं, राइट? तो इसके मतलब ये नहीं कि हम रेजिलियंट है
तो हर सिचुएशन को हम फेस कर पाएंगे, राइट? तो ये काफी लाइक स्टेट ऐसा होता है कि हम कोई सिचुएशन फेस कर पाते हैं, कोई सिचुएशन चैलेंजिंग हो सकता है, राइट? Yeah, Jayalakshmi, thank you for sharing. You have stated that listening music and recharge yourself to take again new step to resolve any problem or concern. Definitely. Now moving further, हम ये domains को देखते हैं, elements of resilience को देखते हैं. So again आप ये जो middle part देखते हैं, coherence. Coherence का मतलब ये होता है कि हमारा logical या फिर हम जो भी situation में consistent रहते हैं या decision making में consistent रहते हैं, right? तो ये जब चार डोमेन मिलता है तो हमारे लिए वो एक स्टेबिलिटी आता है या हमारे लिए वो एक पीस ऑफ माइंड मिलता है, राइट? सो पहले हम देखते हैं कि फिजिकल डोमेन का. सो फिजिकल स्टेबिलिटी जैसे हम देख रहे हैं कि हमारी बॉडी के साथ, हमारे हेल्थ के साथ हम कैसे ध्यान देते हैं, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, राइट? सो से फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात किए थे सर्दी खांसी हो जाता है या फिर सिर्फ like we met with an accident, so some medications, so some treatments would be taken and we get good rest. So how we take care of our physical health, how we take care of our body, that is really important. So building our strength, stamina, right? और डेली रूटीन पे आपका हेल्थ को ध्यान रखते हुए खाना, नींद वगैरह जब हमारे लिए पूरा मिलता है तो हम ये एस्पेक्ट को डेफिनेटली ये कंपोनेंट्स को हम मैनेज कर सकते हैं, राइट? नाउ कमिंग टू द सेकंड वन, जब हम इमोशनल की बात करते हैं, everyone feels ups and downs, right? So emotional stability is very much important, right? So when we talk about the emotional stability, इमोशनली जब हम ओपन अप करते हैं किसी के साथ, जब जैसे माधुरी जी ने भी फर्स्ट हाफ में बताए हैं कि टॉकिंग अबाउट आवर डिफिकल्टीज इज आल्सो इम्पोर्टेंट. जब हमें मालूम है कि हम इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं या इस सिचुएशन में हमें कुछ तरीका नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन हो सकती है या फिर डिसीजन मेकिंग में थोड़ा इश्यूज हो सकते हैं, तो जब हम रीच आउट करते हैं, जब हम हमारे इमोशंस को ओपन अप करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? तो जैसे हम इमोशंस को ओपन अप करते हैं, साथ ही साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे एनवायरनमेंट पे जो सामने वाले व्यक्ति है, इंडिविजुअल्स है, इट कैन बी एनीवन, आवर फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स, एनी सपोर्ट सिस्टम या द प्रोफेशनल, राइट? सो हाउ वी आर टेकिंग देयर पर्सपेक्टिव इज आल्सो इम्पोर्टेंट, राइट? सो ये दो तरीका है, हम ओपन अप भी कर रहे हैं एंड साथ ही साथ हम उसको कैसे हम ले रहे हैं, हाउ वी आर परसीविंग ourselves, right? Perceiving about the situation and allow करना, हम अगेन किसी के लिए वो कनेक्शन जो बिल्ड कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट? कई बार क्या होता है कि हम हिचकिचाते हैं हेल्प मांगने के लिए, हम हमारे डिस्ट्रेस के बारे में शेयर करने के लिए थोड़ा डिस्कम्फर्ट हम महसूस करते हैं, राइट? तो हम सोचते हैं कि हम वो हमारे अंदर ही रखें, but it's important that when you allow yourself and when you allow and experience that connection, you may feel like much better, and self-regulation is also important, right? So having positivity about yourself, it's very important, right? And self-regulation about our own emotions, at the same time being able to control our overwhelming emotions, right? Because कई बार ऐसा होता है कि हम काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से जब फेस करते हैं, हम इमोशंस लाइक एंजाइटी या फिर हम एकदम लो फील कर सकते हैं, स्ट्रेस फील कर सकते हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू process our emotions at time, right? So hence to balance it, it is very much important कि how it's very much important what we are facing at that point of time, what emotions we are feeling. हमारे emotions क्या है वो हमें समझना भी बहुत जरूरी है, ताकि वो रेगुलेट करने में हमारी लिए मदद हो सकती है. जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट डोमेन है. काफी लाइक हमारा अटेंशन को हम कैसे लाइक एक्सपैंड कर रहे हैं, या फिर हमारा फोकस को हम कैसे एक्सपैंड कर रहे हैं, या वो जो हमारा
लाइक जो भी परिस्थिति है उसे डिफरेंट नजरिया से देखना वो भी बहुत जरूरी है, राइट? तो जो भी हम टास्क ले रहे हैं उस पे ओपिनियंस क्रिटिसिजम्स आना काफी नेचुरल है, राइट? सो बट हाउ वी आर परसीविंग इट, हम कितना फ्लेक्सिबल है उस सिचुएशन को भी फेस करना, अडेप्ट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या so it's all about our mind, how we see ourselves, also how other perceives about us is important. Right? जब स्पिरिचुअल की हम बात करते हैं, आत्मिक तरीके से, आत्मिक रूप से जो फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात करते हैं, अगेन हमारे हर किसी की कोई ना कोई वैल्यूज होते हैं, बिलीव्स होते हैं। हम जो एनवायरनमेंट से या फिर जो हम सिस्टम से आते हैं, एवरीवन हैव देयर ओन इंडिविजुअलिटी एंड ओन सेट ऑफ बिलीव्स एंड थॉट्स, व्हिच इज एब्सोल्युटली ओके, राइट? बट ये जरूरी है कि हम किसी में वो इम्पोज नहीं कर, या हमारा जो व्यूज है हम किसी पे दबाव डाल के वो नहीं कह रहे हैं कि नहीं आपको इसी तरीके से रहना चाहिए, या फिर कोई वो दबाव हमारे ऊपर नहीं डाल रहे हैं। दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट, राइट? तो हमारी टॉलरेंस की लेवल क्या है, सहनशीलता की हमारी लाइक जो भी सिचुएशन है, अदर्स व्यूज के बारे में हम कैसे हमारा टॉलरेंस लेवल है वो समझना बहुत जरूरी है। या कई बार हो सकता है कि कुछ चीजें किसी और के नजरिया से अप्रोप्रिएट होगा, राइट? हमारे नजरिया से शायद वो थोड़ा हमारे लिए डिस्कम्फर्टिंग होगा, which is absolutely okay. But as I mentioned, not imposing our thoughts on them and not allowing other people's thoughts on us. Yeah, so that is very much important. So जब हम ये चार डोमेन की बात करते हैं, जब इन चार डोमेन में स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी होता है, तो हमारा वो कोहेरेंस लेवल या एबिलिटी टू थिंक एंड बी लाइक वेरी स्टेबल, वो हमारा बिल्ड होता है, which will give us again the overall well-being would be good, the resilience would be built, and also it would like we may have some peace or peace in our mind. Now moving to the next slide, हमें क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है हम रेजिलियंस को डेवलप करने में। सो जैसे हम बात कर रहे थे, सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो ये पर्सनल स्किल्स है। हम हमारी जो भी कमियां हैं, हर किसी का स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होते हैं, पर अक्सर क्या होता है जब हमारे लिए सिचुएशन क्रिटिकल हो जाता है या जब हम नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को फेस करते हैं, चैलेंजेस को फेस करते हैं, कई बार हम वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, राइट? सो पर्सनल स्किल्स में ये सेल्फ एक्सेप्टेंस को बिल्ड करना काफी इम्पोर्टेंट है। एम्पैथी हम प्रोफेशनल लाइफ में यूज कर रहे हैं, हम दूसरों के साथ एम्पैथाइज कर रहे हैं, हम दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, बट सेम हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम हमारे प्रॉब्लम को कितना समझ रहे हैं, हमारी हमारी जो चैलेंजेस है उसको हम कैसे समझ रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी है। रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन मैनेजमेंट, ये काफी नेचुरल है कि हम एंशियस हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, राइट? तो ये हमें बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। प्रोक्रास्टिनेशन आई थिंक हम फर्स्ट हाफ में भी डिस्कस किए। प्रोक्रास्टिनेशन काफी नेचुरल होता है कि हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं एंड वो शायद आफ्टर अ पॉइंट हमारे लिए वो डिफिकल्ट या चैलेंजिंग हो जाता है। सो हाउ वी कैन like build the skills to face the procrastination, just taking a small step, right? तो छोटा छोटा हम गोल सेट कर सकते हैं टू फेस द प्रोक्रास्टिनेशन। इमोशनल रेगुलेशन, जैसे हम बात किए थे, सेल्फ रेगुलेटिंग आवर इमोशंस, राइट? सोशल स्किल्स की जब हम बात करते हैं, हमारा कम्युनिकेशन स्किल हम कैसे डेवलप कर रहे हैं, राइट? अगेन इट्स अ टू वे प्रोसेस। हम हमारा इमोशंस कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड अपने सपोर्ट सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं। कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड साथ ही साथ जब हमारे लिए सपोर्ट सिस्टम से अगर कोई
हेल्प मिलता है हम वो रिसीव कैसे करते हैं, बराबर. सो इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट दैट वी बैलेंस. नाउ कमिंग टू द लाइफ स्किल्स, रिजॉल्व हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, कोई रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, वर्क लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं हमारे कलीग्स के साथ, उसे हम कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं. तो वो स्किल्स बिल्ड करना बहुत जरूरी. मैनेजिंग आवर स्ट्रेस एवरीडे बेसिस में, लाइक cultivating some self care is also important to balance our day to day stress, right? हम कोई भी इंसान ये कह सकता है कि हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हैं, राइट. We encounter stress in every day basis in some or the other aspect of our life, right? So how do we balance it? Work life balance, yeah. I understand, like जैसे हम फर्स्ट सेक्शन में भी बात कर रहे थे कि वर्क हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, राइट. टास्क हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. कई बार क्या हो जाता है, हम ज्यादा टास्क ले लेते हैं, देन कोप अप करने डिफिकल्ट होता है. कई बार जो टास्क है उससे मैनेज करने में भी कई बार हम स्टक फील करते हैं. सो हाउ डू वी एंश्योर द बैलेंस? Yeah, that's very much important. So these skills are important so that we are able to build the resilience. Yeah. So just before that, I also wanted to summarize like one thing, like as I was repeating, it's important that we strengthen the support system, and it is important that we take the autonomy or responsibility of our own actions and emotions, right? Because वो बहुत जरूरी है इस process में हम जब resilience की बात कर रहे हैं, right? And creating opportunity to face the personal challenges, right? And also managing how we are managing our emotions, that's very important. Yeah? कुछ कमेंट्स यहाँ आए हैं जिसमें गो थ्रू करना चाहती हूँ कि okay, I have been walking all my life, okay, I should start counting my steps then. Absolutely, it would count to the monthly target of mentoring visits for the state. Okay. I understand it can be like at times very challenging and difficult for us to balance all of this on daily basis because we may encounter with multiple people, right? But yeah, absolutely, taking a small step, processing each step, and taking a small like goal that might help us, right? Small target as we discussed. Yeah. Now, talking about the coping skills, we talked about self-care. What is your understanding of self-care? Like, हम तो यहाँ पर टाइप्स के बारे में ऑलरेडी डाल चुके हैं, बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सेल्फ केयर का अंडरस्टैंडिंग क्या है? अगर कोई अनम्यूट करके बताना चाहते हैं, then definitely you are welcome. If you're not comfortable, तो आप चैट के द्वारा भी हमें बता सकते हैं. Doing hobbies that he owns inside us, okay? क्या खुद की देखभाल करना गलत है? क्या मतलब समय निकाल के खुद की देखभाल करना गलत है? ओके. क्या अपने आप के लिए ऑन डेली बेसिस कुछ समय निकालना गलत है? ओके. कई बार हमारा थॉट्स ये होता है कि सेल्फ केयर मतलब खुद के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है हमारे डे टू डे टास्क में भी. हम सवेरे जब उठते हैं तब से लेके लाइक बहुत सारा हमारा बैक टू बैक टास्क होता है. हम वर्किंग प्रोफेशनल्स में हैं तो मैनेजिंग वर्क, रिलेशनशिप, फैमिली, पर्सनल लाइफ, ये काफी चैलेंजेस हो सकता है, राइट?
हम अक्सर हमारे क्लाइंट से भी ये सुनते हैं जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं सेल्फ केयर के बारे में, तो कई बार ये नोशंस होता है लोगों का कि खुद के लिए समय निकालना गलत है, राइट? क्योंकि एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, it's my duty to take care of my family and take care of their needs, not my own needs. I can't prioritize my needs. तो कई बार ये हम जब इंट्रोड्यूस भी करते हैं, तो उनका कहना होता है सेल्फ केयर इज नो नो थिंग, बट हम ये समझना बहुत जरूरी है, सेल्फ केयर कभी वो सेल्फिश एक्ट नहीं है। सेल्फ केयर हर किसी व्यक्ति के लिए important aspect, yeah, so that we are able to balance our body and mind. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या तरीका हो सकता है सेल्फ केयर। पहले फिजिकल हेल्थ की हम कैसे टेक केयर कर सकते हैं। Any thoughts? How can we ensure our physical self care? Doing exercise, absolutely. Yoga, through exercise and yoga. Absolutely. So engaging in exercise, walk, daily like meditation, yoga, etc. Right? So it can ensure that we are able to balance our physical health. At the same time, it is important that we are taking a proper diet. बराबर, हम हेल्दी डाइट का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम डाइट स्किप करते हैं, मील हमारा स्किप करते हैं, वर्क प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ब्रेक नहीं ले पाते हैं, राइट? सो एंश्योर दैट यू आर टेकिंग a break, and your health is also important, right? So sleep, everything would come under physical. Emotional health, इमोशनल सेल्फ केयर हम कैसे देख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। Talking to friends, absolutely. Journaling, fantastic. So some meditation, या सो योगा जैसे हमने बात किए हैं, योगा हो सकता है, जर्नलिंग हो सकता है, लिसनिंग टू म्यूजिक हो सकता है। हमारे इमोशनल जो हमारे पीस ऑफ माइंड हम स्टेबल करने के लिए, हमारा इमोशंस को स्टेबलाइज करने के लिए, इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट वी एंगेज। तो हमारा थॉट्स, जर्नलिंग इज वेरी अगेन अ वेरी इम्पॉर्टेंट। यू कैन लाइक मेक अ नोट ऑफ इट ऑन डेली बेसिस में। आप एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, डायरी मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, सो जर्नलिंग, राइटिंग आवर थॉट्स हेल्प्स अस। ओके, वॉचिंग मूवी, एब्सोल्युटली। सो हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। हम रिफ्रेन करना हमारे थॉट्स को, बराबर एक्टिविटी में एंगेज रखना, दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। सोशल, how do we ensure our social self-care? हमारे सपोर्ट सिस्टम के साथ बिल्ड करना, कनेक्शन लाइक और बिल्ड करना। इट कुड बी एनीवन, सोशल सर्कल में, इट कुड बी आर लाइक वर्किंग कलीग, हम एक साथ अगर काम कर रहे हैं, या फिर इट कुड बी फ्रेंड्स, इट कुड बी आर फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव, नेबर, anyone, right? With whom we feel that connection, yeah? Or it could be some like कई बार ये होता है ना, किटी पार्टी वगैरह होता है, where they feel connected. So same age group का ऐसा group होता है, where they often connect and spend time together. Yeah, so it can be any sort of it. Yeah, having a trip with friends, definitely. Now, while we are talking about the spiritual, again, it is about like connecting with our spiritual life.
meditation, that's one thing. Visiting, like again, हर किसी का belief होता है, right? So if you have belief in certain religious belief, then definitely chanting and everything that can also be incorporated in your daily life, self-care routine में. Intellectual, हम बुक्स रीड करना या फिर हमारा स्किल्स डेवलप करना, फर्दर हमारा जो भी लाइक स्कोप है वो किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं, या कैसे बिल्ड करके हम डेवलप कर सकते हैं, दैट्स इम्पोर्टेंट. मेंटल हेल्थ, हम कैसे हमारा मेंटल वेलबींग को ध्यान देते हैं. अगेन इट्स अगेन ओवरऑल थिंग, हमारा माइंड एंड बॉडी हम कैसे वो बैलेंस रखते हैं. If at any point of time you're feeling stuck, struggled, then do not hesitate to seek mental health support. Yeah? Financial, हमारा जो भी financial कमाई है उसका हम कैसा ध्यान रखते हैं. Right? कई बार होता है कि हम कमाते हैं, again it differs from person to person. कई बार हमारे लिए अंदाजा नहीं होता है कि हम कितना सेव कर पा रहे हैं, कितना हम खर्चा कर पा रहे हैं, राइट? सो हैविंग अ काउंट ऑन दैट आल्सो, मेंटेनिंग अ स्टेबिलिटी वुड आल्सो बी पार्ट ऑफ द सेल्फ केयर. जैसे हम छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं एट द अर्ली एज टेकिंग केयर ऑफ द फाइनेंस, हम छोटा छोटा अमाउंट देते हैं और पिगी बैंक पे हम सेव करने की बात करते हैं. सो डेफिनेटली दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस. Environmental, as we have been discussing, in our situation, in our around surrounding, just to balance with everything, that's very much important. Yeah. Now, just I'll show this small video, and then perhaps we can proceed after. Yes, Madhuri, that would be helpful because this is not audible for me. Yeah.
Thank you, Madhuri, for sharing this. I think every one of us, we resonate this on daily life, right? हमारा डे शुरू होता है and then हो सकता है कि ट्रैफिक वगैरह लाइक बहुत मिलता है कई बार हमारा स्ट्रेस ऐसी छोटी छोटी सिचुएशन में होता है एंड ऑफिस पहुंचते हैं लेट पहुंचते हैं या फिर बहुत सारे टास्क आता है कॉल्स आते हैं मीटिंग्स बैक टू बैक हो गए या ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होता है तो लाइक हमें वो स्ट्रेस बिल्ड होते ही जाता है होते ही जाता है एंड देन व्हेन वी रिटर्न बैक towards the end of the day, we feel very low. We feel like we are done for the day. We just need to rest, right? So, but again, taking care of ourselves to some like just ensuring कि कुछ एक्टिविटी हम डे टू डे बेसिस में इंकॉर्पोरेट करें जैसे हम वीडियो में देख पा रहे हैं कि टू डू लिस्ट उन्होंने बनाया है एंड ऑल्सो कुछ एक्सरसाइज वो एंगेज कर रहे थे एंड वो रिप्लेस किए जंक फूड से हेल्दी फूड्स खाने में सो ये छोटे छोटे जो तरीका है जिससे हम हमारा सेल्फ केयर पे ध्यान रख सकते हैं तो ये हमारा डेली रूटीन इसी तरीके से होता है एंड हमारा स्ट्रेस ऐसे छोटे छोटे विषय में हमारा चैलेंजिंग हो जाता है बट एट द सेम टाइम इट्स इम्पोर्टेंट हाउ वी एंश्योर दैट वी एड some self-care strategies in our daily routine. Yeah. Any thoughts? Any questions? Okay. If not, we will move further. I would request everyone to be part of this exercise. Yeah. मैं चाहूंगी कि आप जहां पर भी हैं आप कंफर्टेबल एक स्पेस में बैठ जाइए आप कंफर्टेबल बैठ के लाइक इट कुड बी इन योर बेडरूम इट कुड बी इन योर like office space it could be like sitting in the floor anywhere wherever you are just sit comfortably close your eyes and sit straight we will do this a small breathing exercise yeah so I would request you to keep one hand on your chest and another hand on your stomach yeah and take a slow breath very deep breath yeah when you inhale slowly you inhale through your nose and while you exhale while you breathe out breathe through your mouth अगर कोई भी थॉट्स विचार आते हैं it is okay let the thoughts be come just observe on your breathing or just imagine one situation or in your environment if you are able to hear some sound or if you're able to hear like your own breathing just pay attention to that so while you inhale through your nose your abdomen should expand and when you breathe out it should contract yeah so again with count we will do this exercise breathing for 4 counts breathing 1 2 3 4 hold your breath 1 2 3 4 slowly exhale your breath for 8 counts 1 2 3 4 5 6 7 8 let's do one more time take a slow breath 1 2 3 4
hold. 1, 2, 3, 4. Again, with the count of 8, you can exhale slowly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let's do one more time. Take a deep breath. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Once you are comfortable, you can open your eyes. I just want you to understand what are your thoughts, how are you feeling at the moment. Anyone would like to share? A bit relaxed, calm, okay. Anyone would want to unmute yourself and share your thoughts? Relaxed and peaceful. Again, there are different forms of performing this breathing exercise, right? So it's important that because we may not be able to control our like overwhelming emotions or cluttering thoughts at any moment, right? So whenever we are having a difficult situation, taking a pause, yeah, taking a pause and just focusing on our breath for a few minutes, like 2 to 3 minutes, can also be helpful. Yeah. So definitely this is something that you can practice this on daily basis and see how this has been helpful to you. Okay, if no one have anything to share, then perhaps we will move on to the next part of it. So practicing gratitude. Um, Gratitude again. What is understanding of gratitude? Anyone would like to share? Gratitude का मतलब क्या है? When was the last time we felt gratitude? Absolutely thankful for what we have. So when was the last time you felt thankful for what you have? Feeling grateful for what we have and where we are. Absolutely. Thank you, Kushbu and Isha, for sharing this. So definitely gratitude means being thankful, feeling grateful for what we have and where we are. So American Psychological Association उनका भी ये definition ये है कि like sense of happiness जो है हमारे जो हम again
जो भी जेस्चर हमारे लिए हमारे कोवर्कर से मिलता है, फैमिली मेंबर से मिलता है, कई बार जो मनपसंद की चीजें अगर हमें मिल जाती हैं, हम कितना उनको थैंकफुल करते हैं, कितना उनको उनका वो जो वैल्यू करते हुए हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने वैसा सोचा है हमारे बारे में। सो सेम वे हमारे लिए भी ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, या जो हमारी लाइफ है ऑन डे टू डे बेसिस में कई लोगों को कई मुश्किलें सामना करना पड़ता है। हम देख पा रहे हैं कि पैंडेमिक के बाद एंड पोस्ट पैंडेमिक ऑल्सो काफी चैलेंजेस लोग फेस कर रहे हैं, बट somewhere we are able to manage it, right? So it's important that we practice this gratitude on daily basis. इससे क्या होता है, हमारा फोकस वो पॉजिटिव हमारी पॉजिटिविटी में लाइक और आगे बढ़ता है, एंड ऑल्सो इट हेल्प्स अस इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हम यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स हमने ऐसे ही डाले हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे लिए वो हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, जो वो जो इनर पीस के साथ जो हैप्पीनेस मिलता है वो टेम्पररी नहीं होता है, राइट? वो काफी टाइम के लिए हम वो मेमोरेबल रख सकते हैं, राइट? एंड इट इम्प्रूव्स आवर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। ओवरऑल वेलबींग का इम्प्रूवमेंट होता है जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं। हमारे सेल्फ कंट्रोल स्ट्रेंथन करने में बहुत हेल्पफुल हो जाता है जब हम ग्रैटिट्यूड, क्योंकि हमारे वीकनेसेस क्या है ये हम समझ पाएंगे, हमारा स्ट्रेंथ क्या है उसे हम और बिल्ड करते हैं, तो हमारा वो सेल्फ कंट्रोल होता है। हेल्प्स करियर एंड लाइफ गोल्स, facilitates social and well-being, facilitates better sleep, improves physical health। तो हम खुद जब हम प्रैक्टिस करते हैं माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, योगा, तो हमारी वो एक लाइक इम्प्रूवमेंट हम खुद हमारे फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड हमारे एनवायरनमेंट में भी हम देख पाएंगे। अगेन एवरी डे बेसिस में आई वुड रिक्वेस्ट, मॉर्निंग जब आप वेकअप, जब आप उठते हैं, 2 मिनट अपने लिए समय निकालें और एक मोमेंट या फिर ऐसे कुछ नोटिस कीजिए और एक्नॉलेज कीजिए आप किस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हैं। या सिमिलरली मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, जब आप बिस्तर में जाने से पहले, सोने से पहले 2 मिनट अपने लिए समय निकाल के आप देखिए कि पूरा दिन आपका कैसा रहा है एंड क्या चैलेंजेस आप फेस किए एंड क्या सिचुएशंस के लिए आप ग्रेटफुल हैं। या कोई सिचुएशन उस दिन हमारे लिए अच्छा होगा, कोई स्टेक होल्डर के साथ हम कोऑर्डिनेशन किए होंगे, वो सक्सेसफुल हुआ होगा जिससे हमारे लिए हैप्पीनेस होगा, या फिर कोई टारगेट हमारे लिए सेट किए होंगे, पर्सनल टारगेट, वो हमारा अकम्प्लिश हुआ होगा, राइट? सो just try and recollect throughout the day whatever has happened and see and acknowledge कि आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल है। जर्नलिंग, जिसे हम चैट के द्वारा भी बताए हैं कि जर्नलिंग कोई एज अ सेल्फ केयर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं डेफिनेटली। तो हमारे थॉट्स में क्या आ रहा है, फीलिंग्स हमारा क्या है, वो हेल्प करता है। हम जब क्लाइंट को भी बताते हैं कि आप जर्नलिंग कीजिए, तो उनका फीडबैक फॉलोअप सेशंस में आते हैं कि वो कहते हैं कि एक क्लैरिटी मिला है। जब सेशंस में आते हैं काफी उनका थॉट्स, क्लटरिंग थॉट्स होता है, काफी वो कंफ्यूज होते हैं, बट देन आफ्टर अ पॉइंट they are able to get the clarity and are able to make decision for themselves. Yeah, so definitely journaling helps in like managing our stress and anxiety, प्रायोरिटाइजिंग हमारा जो भी प्रॉब्लम्स है, फियर्स है, इनसिक्योरिटी है या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है, चैलेंजेस हैं, उसको हम देख सकते हैं कि उसे हम प्रायोरिटाइज कैसे करें और कोपिंग्स को कैसे बिल्ड करें। अपॉर्चुनिटी फॉर द पॉजिटिव टॉक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हम एफर्मेशन प्रैक्टिस करना, हम पॉजिटिव टॉक हमारे डेली रूटीन में कैसे हम डेवलप करें। या सो journaling helps us in building the positive talk also, being positive about the situation. So it's again just a small exercise about self compassion. I may not take much time into this, but
Self-compassion is also all about loving your own self, understanding your own self, and being kind and gentle to yourself, right? The way you are gentle to other people, it could be your loved ones, it could be your co-worker. कोई हमारी mistakes हो जाते हैं, हमारे फ्रेंड से कोई मिस्टेक्स हो जाते हैं, हम उनको दोष नहीं देते हैं. We still say that it is absolutely okay. It is okay to face that situation. It is okay to feel that way, right? So हमारा खुद का भी वो नरेशन होना चाहिए. जब हम क्रिटिकल सिचुएशन से जाते हैं, हम डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करते हैं, it is important that we don't criticize ourselves, be it related to our career, be it related to how we look, yeah, our like appearance, हमारा relationship को लेके, be gentle and kind. Yeah. The strength-based approach, definitely focusing on our strength, जैसे हम weakness and अच्छा weakness and strength देख रहे हैं. Strength को focus जब हम करते हैं, हम उसको rebuild कर सकते हैं, right? And strength-based approach लेते हैं तो हमारा आउटलुक जो देखने की तरीका है वो भी पर्सपेक्टिव चेंज होता है, राइट? लुक फॉर द एक्सेप्शंस इन द प्रॉब्लम स्टोरीज. तो जब आपके आपके सिचुएशन में भी, या फिर आपके जो भी आप किसी के कांटेक्ट में आते हैं उनके सिचुएशन में भी कई कुछ ऐसी चीजें होंगी जो उनके लिए पास्ट में हेल्पफुल या फिर काफी मददगार हुआ होगा, वो काफी अच्छी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किए होंगे, राइट? So pick for those cues and then look for the exceptions कि उस situation में और कैसे वो deal कर सकते हैं. Yeah. I think this is all about the coping skills. I just wanted to understand from you all, like, what are your thoughts? And definitely if there are any questions, we can take it ahead. ये हमारा डेडिकेटेड हेल्पलाइन सर्विस है, क्योंकि जैसे आप अपना काम बहुत प्यार से करते हैं, आप काफी डेडिकेटेडली कर रहे हैं, बट हमारे लिए भी एग्जॉस्टिंग हो सकता है, हमारे लिए भी ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो सकता है, राइट? सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट व्हाइल यू आर फेसिंग दिस चैलेंजेस, इट्स इम्पोर्टेंट दैट हाउ यू take care of yourself. So definitely we are here, mental health practitioners can come together for this age, right? So we provide in multi languages. Yeah. So definitely you can make a note of this. We are available from Monday to Saturday from morning 10 to 10 p.m. And kindly make a note of this number. I'm sure आप पहले भी number note किए होंगे, but definitely आप ये number note करके you can reach out to us. Yes, Priyanshi, I can see you have raised your hand. You may proceed. Hey, hi, session. Everything very wonderfully. Just wanted to understand. I don't think we talked about boundaries in this session, right? Absolutely. If I'm not wrong. I think this is something that you can throw some light on if you have time. I think that would benefit everybody. It's important to understand how to draw boundaries and in general when you are accommodating as a person, how you're not taking for a ride. And in general, I think especially the kind of just give this idea to everybody and to me also, that's to how to establish good boundaries, and also like there's not any sort of abuse in any particular way. So I think maybe we can discuss that a little bit if you have time. Absolutely. So again, I'll try to briefly cover this point. So boundary settings, again, it's very much important in our life, right? Again, personal boundary setting as well as in the professional life, right? So again, बाउंड्री सेटिंग का मतलब आइडिया क्या है वो भी बहुत समझना जरूरी है, राइट? कई बार क्या होता है कि हम like again, because of the situation, because of the pressure, because of our environment, हम
सारा टास्क ले लेते हैं and then we feel pressurized, right? So when you're not comfortable with a specific thing, it is okay to say no, being assertive, right? But at the same time, it is also important for us to understand वो task हमारे लिए कितना important है, क्या हम prioritize कर सकते हैं या फिर कुछ और समय के लिए हम वो postpone कर सकते हैं. So just drawing that is very much important. Yeah. Again, in our professional setup also, while we are dealing with our clients, stakeholders, it's very much important to keep this in mind, right? Because कई बार क्या होता है कि हम मदद कर रहे हैं लोगों को और उनका शायद एक्सपेक्टेशंस बहुत ऐसा होगा कि पर्सनल लेवल पे हम उनको जाके मदद नहीं कर सकते हैं. हमारे जैसे क्लाइंट कई बार कॉल करते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनके फैमिली मेंबर से बात करें, स्टूडेंट चाहते हैं कि पेरेंट्स से बात करें, या फिर एक चाइल्ड चाहता है कि उनके पेरेंट्स से बात करें या टीचर से बात करें, या फिर फाइनेंशियल एड के लिए वो रीच आउट करते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं सिर्फ आपके भरोसे में है कि आप हमें फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कीजिए बिकॉज टाटा के साथ एसोसिएट है. तो कई बार वो एक्सपेक्टेशंस होता है बट हमारा लिमिटेशंस है. इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट दैट वी कन्वे टू देम एंड सेट अ बाउंड्री एंड स्टेटिंग दैट बिकॉज कई बार क्या होता है कि एक थिन लाइन होता है, हम कभी क्रॉस होके उधर भी जा सकते हैं या फिर कई बार क्रॉस होके लाइक क्लाइंट क्रॉस होके काउंसलर के स्पेस में आते हैं. सो इट्स इम्पोर्टेंट टू सेट दैट बाउंड्रीज in our therapeutic relationship also. Did I answer to your question, Priyanshi? Yeah, definitely. I just thought it would help everybody. Also, when and how exactly, I think that's also very important to realize. When do you sort of set those boundaries and because then sometimes you find yourself in a gray area, right? So I think I also want to understand as to when one should set those boundaries and how should a firm or sort of reiterate those boundaries at times is something that I want to understand as well from Absolutely. you. So yes, absolutely. So when it is taking a toll on you, right? It's important that we communicate, right? So again, ये ऐसा नहीं होता है कि हम सीधा assertively बोल रहे हैं कि no मतलब no, हम उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे. नहीं, it's not about that, right? So when you talk about the boundary setting, it is also important that you try and understand where it is coming from. If you are experiencing any challenges, has that been communicated, right? That is also important. And what have you explored so far to manage those challenges, right? So when you feel that nothing seems to be working, even after multiple communication that is not helping you, and something that is causing you distress या डिस्कम्फर्ट सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, काफी मुश्किल हो रहा है एंड आपको लग रहा है कि इसके आगे लाइक आपका थ्रेशोल्ड खत्म हो गया, इसके आगे आप नहीं ले पाएंगे, then definitely you can reach out to the concerned person and discuss all of this, right? And state that you would want to, what is your expectation? So communicate. So communication plays a very important role here, right? So being assertive is one thing, but then again, it's important that we be, I mean, very mindful about what we are conveying. So be precise. आपका जो भी कंसर्न्स होंगे, जो challenges हो रहे हैं, आप क्या बात करना चाहते हैं, discussion का agenda क्या है, be clear in your thoughts, perhaps make a note of it, and then you can have a communication with the concerned individuals. Yeah, be it in our professional life, personal life, or in our any aspect of our life. Yeah. Yeah, got it. Thanks, Sharon. Most welcome. Any other questions?
और कोई सवाल है किसी को, कुछ आप पूछना चाहते हैं? Hi, there was one question in the beginning. Is it okay if I address them? Yeah, absolutely. Thank you. There was one question. Is it necessary to have happy face to be considered as optimistic? काफी बार, not काफी बार, but in generally हमारा mind और body जो है वो connected होता है. जो हमारे inner thoughts होते हैं, emotions होते हैं, हमारे body पे दिख जाते हैं. So if you see a person who is angry, you can obviously make out from their face that they are angry with their facial expression, their body language, right? So इस चीजें समझती हैं कि जब वो optimistic है या pessimistic है. Similarly, काफी बार जो optimistic लोग होते हैं उनका decision लेने का स्टाइल भी अलग होता है. जो लोग pessimistic नहीं होते हैं या फिर challenges face करते हैं उनका decision लेने का भी तरीका अलग होता है. Also talking about, जैसे हम बात कर रहे थे कि काफी सारे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हो सकते हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल. तो उस तरह से काफी बार हम थोड़ा डिस्ट्रेस महसूस कर सकते हैं, थोड़ा टायर्ड में लग सकते हैं, कंफ्यूज महसूस कर सकते हैं. But that doesn't mean that you are pessimistic. That doesn't mean that you don't want to resolve this issue, right? So ये इंटरकनेक्टेड, जो कनेक्टेड है वो दिखता है, बट दैट डजंट मीन कि एक ही क्यूज को लेके हम उस पर्सन को एनालिसिस कर सकते हैं. एंड दैट इज द रीजन दैट कि जब आप काउंसलर्स को भी काफी बार बोला जाता है कि आप लोगों के चेहरे को देख के इंटरप्रेट कर सकते हो क्या उसके मन के अंदर क्या चल रहा है. वी डोंट डू दैट. वी डोंट एंगेज इनटू ऑल ऑफ दिस, राइट? Similarly, there was one comment I would definitely like to talk about that when we were talking about resilience. So one person said talking to stakeholders knowing that they will not understand what you are going through, but being positive. I completely understand where is this coming from, the challenges that you experience while working with the stakeholders. It's very difficult. But at the same time, being resilient means thinking about that, अगर ये काम नहीं कर रहा है तो मैं किस तरह से अपनी strategy को revise करूं, क्या और तरीका हो सकता है. How do I change my strategy while working with the stakeholders, while अगर मैं कुछ स्पेसिफिक इंटरवेंशंस की बात कर रही हूँ, चीजों की बात कर रही हूँ, तो उसको कैसे बदलाव किया जा सकता है. At the same time, how I can change my communication pattern so that I can develop my relationship with the stakeholders. So उस तरीके से अलग अलग लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में सोचना. It's not only about being positive, but also about thinking what else can be done, what else can be, implemented in order to resolve this issue. That is also about being resilient. And one person talked about that how helping, walking helps her to calm down. Again, that's a mindfulness. Whatever activity you are engaged with, when you do that activity with full attention, with being involved mindfully, it helps you to calm down. That change our mind state. And definitely we are going to address that particular part in our next session. But also considering the time limit that we have already crossed 12 o'clock. But हमने start भी 10 को किया था. I'm very sure you might be having some questions, some doubts to ask. तो नेक्स्ट सेशन हम रिकैप के स्टार्ट शुरू कर सकते हैं. एंड मे बी आपके जो अगर कुछ क्वेश्चंस है, आई वुड से कि आप कहीं पे वो स्टोर कर लीजिए क्वेश्चंस, डाउट्स, एंड डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन जो है मे बी वी कैन एड्रेस दोस क्वेश्चंस एंड देन नेक्स्ट सेशन का एजेंडा हम शुरू कर सकते हैं, तो ताकि कनेक्टिविटी हमारे सेशंस की बनी रहे. बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. Time exceed हो चुका है, but still you have been very patient, you are engaged, you are involved, asking questions that talks about that how eagerly you want to work on the mental health, and the way you are passionate about changing your mental health and helping yourself. So thank you for being such a kind